So yesterday we are uh, talking about the micro partition. Okay, and please let me know means if you don't understand anywhere, please inform me. Okay, till here, no doubt. Anyone have doubt? Sir, Hmm? micro partitioning is basically compression of data and uh, like efficiently storing it. No. It's a compression is a different thing. Micro partition is different thing. Compression is also happening, but apart from that, in micro partition, suppose we have a 10 liter of milk, right? And we don't want to carry 10 liter of milk. We want to distribute it means a small 1 liter packet, and we can give it to the sell it, right? So in that Yes. scenario, so what is going to happen? In the same way, how we are going to load the data? Whenever we are loading the data, Snowflake automatically divide this data, what will be the volume of data, that is the divide this data into small part. Okay, and that is only part micro partition. Okay, got it. So basically it is division of data into small units. So that's a means already mentioned in our uh, definition as well. You will able to see, right? Mhm. Yes. Now I was talking about the clustering, and clustering. I have given an example of. I have already means given a one query to run it, right? So yesterday we found it that here, right? Rohit shared the screenshot of that. So all are ready with means there is this one Yes, yes. Snowflake account ready. Now, Rohit, can you run again? This on anyone can run again. Ragini means you have created a this table with full data or not? Yes, I Okay. did. Okay. So can you share your screen? Uh, 1 minute. Shall I share my screen? Yes, yes, correct. Okay. Mm, mm. So, guys, one before telling this, we are going to create a table. Okay, we are going to create a table, and the column are there. I have already defined 8 column here, just like a customer key. Can you show means Ragini? I mean your screen and Yes, yeah. I have shared. Can't you see? 1 minute. 1 minute. Yeah. Yes, correct. You can So, see, right? yeah, Yeah. correct. Please, guys, everyone can run this query to understanding purpose. Take a screenshot of your means what is how much time it took, and once so you will able to identify that what is difference in clustering going to happen.
Okay. Now moving forward, what we can do means everybody will switch to the medium warehouse sizes. Okay, it's right now small, I think, or extra small something, right? So more. You click on the so more. Uh, take a screenshot of this. Keep it handy with everyone. So all run this query. Everyone had ran it. Please run it. Rohit Yes, yes. now. So how much second it's taking for you means Rohit. I think yesterday Rohit said yeah, scanning it happened for the Rohit 6.7 GB and the time it took 2 minutes 1 second. Okay, now Ragni said, let me check this one. So for the Ragni same query 6.7 GB and 2 minute 2 second. Okay, so this much scanning happened. Right now, guys, if you have not done, please let me know, right? Again, I have created means I want to create you guys to create a table. So check your inbox, chat box. Sorry, in not inbox, chat box. In chat, I have shared the query. Please check it. Guys, please respond. Talk. Yes, do we need to run this query that you have shared? Huh. But Rohit, this one I think we have already done yesterday. no, no, there is a difference. If you not notice, I will let Okay, you know. There is a difference. difference. You will find it. Okay, okay. It's Okay. showing error, Santosh. New query. Yeah, the new one you So shared just might now. we check means what is the error going to be happen? Ragini, can you means take the uh, query from the Yes, chat yes, I'm box? trying to. Yes. रोहित मीन्स कल भी सेम एरर आया होगा सेम एरर होगा ध्यान से देखो Cluster by C dot nation key. So हम सारा चीज चेक करके my मतलब screen is अब तुम visible. लोग को दिख मतलब हाँ वो या योर स्क्रीन इज विजुअल ओके रन इट Here we select सी लाइन 10 syntax error aspect. सी select the db first my db in starting We have to put public here. no means that is fine create or means public before public you can keep the db
mydv dot public. Yes. Create or replace table name. There you can put it my db dot public. Now go down, go down, go down. One more bracket need to be give, I think. Need to be one more bracket required, Rohit, because you have opened the bracket, you have event closed it. Bracket, yeah. Now run it. Select the query and then run it. What happened? Cluster, why it's not working? We have that she destination key in cluster. Sorry. We have that nation key inside the table. Yes, it is. Nation key is there, Yes. right? I don't think so. It's there. You can see in top while. Yeah, yeah. Nation key is there. One minute. Table name should be public dot customer, I think. What No, people no, no. think Means do public dot one thing. customer Do cluster. one thing. Uh, 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 Remove this one. We do like this. No, no. You can Re- share your screen. yeah, yeah. You have to do in this way. What correct? Correct. Means column is need to be put before that, and then we have to give the cluster by means column name. Okay, got it. It's working. This one Ragini shared. Yes, you can take it. This one is working. This one will go. Rohit, share your screen. Is it visible? Easy. Now, how we have inserted data yesterday, same way you can insert data again in this table, new table. It's a table name what? Customer underscore cluster. There is a no data inside this table. You can create a insert the data. Yesterday we have inserted the data, right? You want syntax for that as Yes. well? This one. I given the yesterday only means table. They see insert data in a means non cluster table. In same way, you can only change the name of table. You can able to insert it. Chat room. You go into the chat room. Change the name. Yeah, that's fine. Okay. Now run it. No, change the snowflake sample. Yeah, correct. Bye. Yeah, correct. Same table we have to insert here as well. Yes, correct. So everybody same table yesterday. That's why then we are going to identify the duplicate means difference here, right? Otherwise, how can?
Everybody is doing. Yes, it's going. Ankana, what about you? Yes, I executed the query. It's working. Yes, after putting this cluster by after Ha, adding that this. means typo. Okay. Uh, so it's working. You have noted down your means what is time taken by the means in non-cluster table. Yesterday means yesterday which table we have created. Yes, sir. See guys, I can do as well from my side, but I wanted to you guys can only do, so it will be better, right? Means now. So guys, Second sentence, why I'm getting error, syntax error. Like I have also like I have like enter into public dot customer underscore cluster. hmm Select star from Snowflake sample underscore data dot cpcs underscore ss 1000 dot customer. Still I'm getting error. can you share your screen? Yeah, sure. Is my screen is visible? Yes, yes. So yeah, this is the one. You have And given why given curly bracket or normal bracket is there? this one? Not. I mean, you have created table means cluster table. I mean, customer with cluster table. Yes, Yeah, it was yeah, showing. yeah. It's a Hmm. showing right Hmm. now. I mentioned you have inserted data. You haven't inserted data as of now. So I have done this one. Okay, okay. Wait, wait, wait. Insert into public. Public. You are in public. Okay. Customer cluster. Select. So see, actually means you can mention edge as well here. Means cluster after cluster you can add edge. It will be edgy little Yeah. little. Yeah, edge. Yeah, edge. Okay. Select a star Now, from Snowflake sample data dot this one cluster. Okay. Now run it. Select both the line and run it. Here you can give mydb dot mydb in a yeah. yeah. My Oh, what's wrong? Select star from select insert into remove edge. Underscore is not there after Snowflake. Manoj, underscore is not there after Snowflake. here. Here. Ha, that's wrong. Yeah, yeah, correct. Underscore is under a snowflake and underscore should be Delete one mentioned. space there. Remove your space. Yeah, yeah, there. Yeah, it's a one word only. Yeah, you So can do run I it. Now need you to can. keep this my DB dot public? Do I need to keep this my DB Yeah, dot remove public? that one also. A space you Yeah, can yeah, remove it. remove. Hmm. Run it. Fine. Hmm. Hmm. Now, guys, means if you'll see the syntax of the
both the table, we have a same data in the both the table, right? It's is it there or not? We have loaded the same data, okay, one with a non without cluster key, one we have created with the cluster key, okay. So we have added a extra cluster key, cluster by this one. Got it? Yes. So now what we can do, it's just still running, right? Mm. Okay, Ragini, you can share a screen. Means might be it will take time. So meanwhile we can understand. Uh, Now, huh. Now, that still your also running. actually I did the select a star from this one, like whatever the new one we have Okay, created. okay, no, no, no. It I means inserted stop. the data. Okay, okay, you stop Yeah. it, stop it. Go, click on the result, or click on the result. In same way, means Okay. you huh. Now you can do and select a star from. You can write from both the table syntax. You can write for both the table. Just change means yeah. With the cluster means customer underscore cluster non cluster, and another is a customer underscore cluster. You can write it. I have to like select a star from both, right? Yes, Is yes, it? yeah, yeah. You can write two syntax for that. So I have a No, syntax for both. now write where in both the syntax. You can write But okay, where? uh, where C nation, right? What is column C underscore nation key Hmm. equal to 2 in both you can add. Now run it for last. I mean, first you can run it non-cluster one. First, I have to run this. Yeah, run it. Okay. Now, guys, can you able to see? Means so more. You can do so more. Now you are able to see that here. What we are seeing that how many row is scanned. Scanning is how much data Six, happens 6.7 GB, right? 7 GB, yes. Yes, and Yeah, 100% data is scanned. Means it look the query is run for 100% of data, right? Means a scanning is done, and the total time it take by the query duration time how much? 13 seconds, right? 30 seconds, yes. Now run it the second query means the first query means what you have written that is with the means cluster key with cluster key. Yeah, this one. So more. Now how much scanning happened? Same 6.7 GB, Okay. 100%. And how much time duration it took? 10 seconds. But uh, I am doing right now. Wait, means, it will be helpful for you guys to make you understand. Let me know means my screen is visible or not. Yes, it is. Yes, it is.
Somewhere I finished. क्या यार, ये क्या हो जाता है? शायद 60 मिनट हो गया था तो मीटिंग। या संतोष रिकॉर्डिंग चालू करी थी आज? आज की रिकॉर्डिंग तो मैंने कर दिया है। इट्स रनिंग राइट। ओके। पहले ऐसा नहीं होता था। नाउ मीन्स वी आर लॉट्स ऑफ पहले जितना They मन। have set, I think, the limitations या of हम्म 1 hour. या बिकॉज फ्री है ना, हम लोग भी फ्री का यूज कर रहे हैं तो इसलिए। हाँ, yes. एटलीस्ट माइक्रोसॉफ्ट 1 आवर का दे रहा है, जूम में 40 मिनट है फ्री का। उसके बाद फिर से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। We can start now, Santosh. All हाँ join. हाँ, इट्स गोइंग। हाँ, असल में मेरा ये क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। नाउ you are able to see I'm also I'm created right the tables. To so I have created a student test customer. Where I created under public my test public customer here need to become. Yeah. So now I have a both customer and means customer underscore cluster and non cluster as well. Here I wanted to insert. Uh, Santosh, can you share the screen? okay. Forget. Visual. It's loading. Yes. Okay. Now you will see here, right? Means so I'm inserting data right now under non-cluster. Same thing whatever you have guys have done. Yes. What I can do it. In the meanwhile, select star from teacher my test. Cust- teacher customer under cluster non-cluster, right? Okay, non-cluster. Okay.
Here it is then C underscore lesson. Guys, if you are able to see here what happened, so table scan happen. If you'll see here, so table scan happened 64%, right? And result is a 25% means it came. I will show you that as well. And the total byte scan this much happen and percentage scan from cache because this much and byte written to this. I will tell you right now. So partition scanned. So number of partition scanned by 421 partition created by this table means whatever the table is means we have created non-cluster one. So total number of partition is created by Snowflake is 421. Okay. Now what I can do it, I will run this one for cluster. Then you will understand better actually what is cluster. So this table is a cluster one, okay, and this is the non-cluster. So if you'll see here, in here details we'll see. So success duration 40 seconds is taken by, and the 40 second. If you'll see here, so table scan 64%, 64.3 percentage. So what happening? I mentioned you the. So here what happened? So 421 partition is created by the Snowflake for the non-cluster table for the same data, right? If you'll see in this one, so same because the data size is same only in the both the table, right? Whatever the data is available in this table, non-cluster, same data is available under the cluster table as well. Now, so if you'll see here, the difference is what? So table scan to happen, that is a means here first I will show you the time difference. So here 12 seconds it took, okay. Here it took, in this it took 14 seconds, right? So difference is that of 2 seconds, but it's not happen in real time because it's going to be more because you have run the query first time as of now. So that's the reason it took lots of time. If you run again both the query, you will get to know that how much difference is going to come. Okay,
So I'm running both the query again. Let's see how much difference is coming. I will remove this one. Both. It looks very easy in a real time, but it's a very what in a practical in a real time application. Here it looks like a 2 second, 3 second is a very small difference between after giving the uh, implementing the customer cluster key as well. So this is the non-cluster one. So if you'll see here, so it took 12 seconds. Previously, how much time it took? So 14 seconds it took. Now I will run for this one. And how much total partition is scanned? Total means 421 total partition happened. A partition is scanned 421, right? Total number of total partition and the total partition is scanned by in this query. But if we talk about the this query, this is a cluster one. So how much time it took? See the difference. How much it came? It came in millisecond, right? Okay. Why it's not showing the details? Okay. So how much scanning happen here? Zero. Why it's happened zero? Anyone able to tell? Is it due to cache memory? Yeah, means we don't need to. I made something wrong here. That's why you guys are not able to identify. Actually, thing is that wrong means I no need I don't have to use this one cache right now. Means same query. I had to use different query, but then it will be easy to understand. We know means total partition happened 421 for this table, and the partition is scanned by the Snowflake is for total number of partition only. But how much time it took? 10 second. Now coming to this one, cache is working if same query is fired again. Means if we are running same query, Yes. then will the cache Hmm. is going to work. So what happened here means now it will be easy to. Now this is one is for the cluster key. The query means table with the cluster key. Now here you will see how much partition total 482. Four. Okay, 24. 482, Like, 484. no, yes, 482 but partition? partition is scanned is 24. Yeah. Hmm. So C means what difference you are able to understand here. See number of partition here means in this table is means 421, and if Hmm. you not implement the cluster key, it will look into the all the data, all the tables, right, all the total number of partition. But if you are implementing the cluster key, then it will look only for that means micro partition under which data is available. So only Oh, 24 means partition is scanned. So this means
our query performance is going to be increased, right? See, means 6.6 Yeah. second happen. So since we have a, see, means the Snowflake tell us, since we have a very less volume of data here, that's why it's not looks like a very means uh, minimal difference we are able to see here, right? But if we'll it in terms of practical example, whenever the data size is a more than 10 TB, Snowflake suggests us, right? Clustering is a key factor in means query performance. It reduces the scanning of micro partition. You have seen the how it's reduced the scanning of micro partition, right? If you are implementing the cluster key, the it will macro partition scanning is going to be less. Everyone agree? You Yes. have you seen it right now? Yes. Yes. Okay. But this cluster key, like as we are giving it as a like create a cluster, but this one is a random one that it generate automatically Which one? The cluster key? cluster key. No, no, no. We have Yes. we So have to implement it. You have seen the difference of syntax difference in both the time, both the table, right? yes, yes, So we yeah. have That we have a forcefully implemented cluster by, right? Means for the yes, right. one of the column. Hmm. Okay, one of the column we have implemented, right? Yes. So you have seen the So tell me. yes. Uh, So as we are writing this syntax for creating a table, so we can give the cluster key while creating a table, right? And this should be on one like a key, like it could be a primary key or something. And whenever we are defining it like cluster by like a nation key, so we have just given it like giving a kind of the command like it should be a cluster by. So what Snowflake do, it will create a cluster like kind of the keys are auto generate like these clusters. no, How it's this no. basically I wanted to know how this work in backend. Backend only I have mentioned, means see, means suppose the Hmm. clustered key improve the performance of a query, okay, application, okay. Cluster key Yes. improve the performance of a query, but it's a हाँ वो मेरे को समझ में आया पर हाँ मेरा क्वेश्चन पता है क्या है ना कि हाँ जैसे कि देखो हमने एक टेबल लिया जिसमें हमने क्लस्टर बाय नेशन की कर दी है हाँ ना हाँ और दूसरा वाला हमने टेबल लिया जिसमें हमने कोई क्लस्टर दिया ही नहीं तो हम्म अब जो हमने क्लस्टर बाय नेशन की किया है ना तो इसमें क्या होगा कि जब हम टेबल को रन करेंगे तो ये स्नोफ्लैक क्या करेगा कि बैकएंड में एक क्लस्टर मतलब क्लस्टर वाला जो कॉलम है वो ऐड करेगा और इन सबको एक रैंडम नंबर देगा लाइक रैंडम यूनिक नंबर देगा इसके हिसाब से वो बैकएंड में काम करेगा और स्कैन करेगा है ना ऑफ और कोर्स दूसरे वाले को तो हाँ हमने दिया ही ऑफ नहीं है कोर्स क्लस्टर आपको ऑफ तो कोर्स इसमें ऑफ कोई कोर्स की नहीं है ऑफ कुछ भी कोर्स नहीं ऑफ है कोर्स ऑफ कोर्स दे विल कीप मीन्स हम क्लस्टर की डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका एक हाँ नंबर मतलब वो उसका डेटा रखेगा वो, ठीक है, और उसी डेटा पे डायरेक्ट वो पुल कर लेगा रिजल्ट। इसीलिए इसमें हाँ जो होता है बाकी चीज को देखना नहीं होता है, बाकी चीज को नहीं देखना होता है, जो क्लस्टर की में हाँ इम्प्लीमेंटेड है, जो नंबर हमको चाहिए हाँ उसी को स्कैन करेगा जाके, ठीक है। और जो क्लस्टर की है हम मतलब अगर क्रिएट कर सकते हैं तो इसका ऐसा कुछ होगा कि हम इसको सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू या जो प्राइमरी की है उसी पे हम लोग क्लस्टर की बना सकते हैं या फिर जो हमारा डायमेंशन है तो डायमेंशन पे नहीं बना सकते होंगे न्यूमेरिक या प्राइमरी की पे हम क्लस्टर की बना सकते हैं ऐसा ऐसा कुछ कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ हमें से आप समझ सकती हो किसी भी चीज़ को अगर यूनिकली जैसे प्राइमरी की ही देते हैं तो यूनिक नंबर हाँ देते हैं, राइट हाँ जिसमें कि मतलब हाँ इजी होता है। अगर हम सोचो मतलब हाँ अल्फा न्यूमेरिक में बहुत सारे डेटा डुप्लीकेशन का चांसेस होते हैं, ठीक है। यस हाँ, तो हाँ दैट्स व्हाई मीन्स यू हम्म विल गेट टू नो दैट दिस थिंग्स इज आल्सो। सो मीन्स अच्छा ठीक अब है हमने देखा कि हम्म मतलब क्लस्टर की कैसे काम करता है। क्लस्टर की हमने हम्म वी नो दैट means the Snowflake stored the data in micro partition, right? So if we means एक टेबल का 421 माइक्रो पार्टीशन इसने बनाया और इसमें क्लस्टर की दिए उसमें ज्यादा हो गया, 482 हो गया आई थिंक, राइट? सी हियर। Yes, yes. 482 हुआ और हाँ 20 हाँ, यहाँ उसमें देखो और extra यहाँ देखो कितना हो गया। अब ये क्या कर दिया है ना, तुम ये चीज समझो
इसमें एक्स्ट्रा कॉलम में एक एक्स्ट्रा माइक्रो पार्टीशन इसमें क्लस्टर की में बना दिया। ठीक है, you're getting to, or not my point? If one in table in which we are including cluster key, implementing the cluster key, the micro partitions is increased, right? Yes. हाँ, सो इससे क्या हो गया कि कुछ हमारा मतलब, और उसमें कुछ ऐसे माइक्रो पार्टीशन है जो कि मतलब वो डिटेल्स रखते हैं क्लस्टर की के। ठीक है, कहाँ पे है, किसमें है। तो Okay. इट सो Hmm. हमारा हमने देखा है कि हमें यहाँ वेयर हियर व्हाट हैपन हियर 24 माइक्रो पार्टीशन इज ओनली अ स्कैन, मतलब स्कैनिंग, यू अंडरस्टैंड द स्कैनिंग वर्ड, राइट? मींस Hmm. हाँ, same way Yes. means, and same way here means we have a number of partition is 421, and the means Snowflake has to be a scan without cluster key all the macro partition to look into the data to get the data. Got तो it? मतलब नॉन क्लस्टर में वो सारा ही जितना ही पार्टीशन है सबको स्कैन कर रहा है, और हाँ क्लस्टर में जितना पार्टीशन है उसमें से उसने छांट के जितना माइक्रो पार्टीशन है उसको स्कैन कर रहा है। हाँ, so that's why it's written clustering is a key factor in query performance. It reduces the scanning of macro partition, right? So all have seen that, right? Means right now anyone has not done the practical of this. Sir, I don't understand what is scanning and where it is used. स्कैनिंग Scanning word. स्कैनिंग मतलब हमारा स्कैनिंग मतलब खोजना, सर्च करना किसी चीज को। तुमने देखा है मतलब रेलवे स्टेशन वगैरह में बैग को स्कैन करते हैं। Yes, sir. हाँ, देखते हो ना मेट्रो में एंड ऑल, यू हैव सीन दैट मीन्स एयरपोर्ट एंड ऑल, यू हैव सीन दैट मीन्स हाउ मीन्स लुकिंग इनटू द बैग समथिंग रॉन्ग इनसाइड और समथिंग डेंजरस, और मीन्स illegal products are not carrying by the customer means passenger, right? सो Yes, सेम sir. वे मीन्स व्हाट इज स्कैनिंग, मतलब हमने तुम्हें पहले बताया डेटा को खोज रहे हैं। स्कैनिंग किस लिए करेंगे? हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा, एंड विच डेटा वी आर टॉकिंग अबाउट द, इफ वी टॉक अबाउट द हियर मीन्स व्हाट इज आवर क्वेरी हियर, व्हाट इज क्वेरी आवर मीन्स what query have searched for the data? I have searched the data for the, ऐसा मतलब कस्टमर कस्टमर मीन्स नॉन कस्टमर नॉन क्लस्टर की में हमने खोजा है डेटा को, कौन सा डेटा जिसका नेशन की सी अंडरस्कोर नेशन की 3 हो। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे डेटा को हम सर्च कर रहे हैं, और उस डेटा को सर्च करने के लिए हमारा टोटल मीन्स टोटल नंबर ऑफ मीन्स स्कैनिंग जो हमने हमने पहले ही बताया था, माइक्रो पार्टीशन इसीलिए पढ़ाया था। माइक्रो पार्टीशन जो करता है, स्नोफ्लैक के ऑटोमेटिकली डिफाइंड एल्गोरिथम है कि सारे टेबल्स को, सारे डेटा को, जितने भी टेबल्स को हम क्रिएट करेंगे, व्यू क्रिएट करेंगे, वो डेटा को माइक्रो पार्टीशन में रख देगा। ओके, एंड माइक्रो Yes, पार्टीशन में रखेंगे, क्यों रखेंगे? कि उससे होता है कि थोड़ा इजी होता है स्कैन करना, देखना। ठीक है, correct. और उसी Yes. में इसी में क्लस्टर की इज अ न्यू कंसेप्ट which which reduce the scanning of micro partition, rather than to look all the micro partition, it will look and then means a limited number of micro partition where data exist. Yes. So, sir, basically, here we have grouped all the data according to one parameter, and then we are searching for efficient search. Yes, yes, correct. Fine. Now, a clustering is a subset of columns in the table that are explicitly designed to collocate the data into in the tables in the macro partition. Now you are able to see the definition how it's mentioning. So the correct way means you mention just right now same things, right? A clustering is a subset of column in the tables that are explicitly designated to the collocate the data in the table in the macro partition. Okay, now initially the data will be stored in macro partition in order of inserting the record. We know that Snowflake means implement how we are inserting the data, in that in the same way means macro partition is going to create it, right? Then the, but if we are implementing a clustering key, the data is means arranged in the on the basis of cluster key, not the means how the data is located earlier. Got it? Yes, sir. Now
So it's the cost associated, means we need to pay for the cluster key, right? So we have to choose proper cluster key in any table. If we are implementing, we can define cluster key on multiple tables as well, multiple columns as well, but it's not means recommended by the Snowflake. You can means two or three maximum in a table. You can means use only more two or three tables only. You can implement only on two or three columns only, not more than that in a table. We can modify the cluster key based on the requirement, that is called reclustering. We can do it. Suppose we have created the means cluster key right now on the nation. If required, we can change it also, right? By altering. Reclustering consume credit. Number of credit consumed depends upon the size of tables. So also I mentioned clustering is associated with the cost, so we need to think on that, right? Now see, have you seen that? Means in second example, let us say the cluster our database in same way, means I mentioned, you will see there already have discussed these things. You can go through this. And now if we have to modify the cluster key on existing table, we can alter table by cluster by name and date. Now this is very important. This is asked by the interviewer, how we can choose the cluster key. So define means the define cluster key on columns frequently used in filter condition. The data means you understand the filter condition, right? Where clause. Yes. Okay. Yes. So Yes, sir. the columns which are frequently used, suppose roll number, primary number kinds of column, in that it's recommended. Columns using as a joins, means columns using as a joins, the on the table under which the joins the under the columns under on which the joins is means happen from another table. So you can use that columns, it will be better, right? Frequently used function or expression like year, date, substring, this one. And Snowflake recommended define cluster key on large table and don't on small tables. And don't define cluster key on more than 4 columns. It's recommended by the Snowflake. There is no means limitation, but it's recommended. And the means define the cluster key on large table means more than it's it's mentioned that more than 5 GB data means tables, 10 one 10 I mean, 10 GB tables, not sorry 1 TB tables, right? If you less data, you don't need to implement anything. Snowflake is self sufficient to do it, right? So guys, as of now we have learned about the what is Snowflake, why Snowflake, okay, what is advantage of Snowflake. We have means talk about the cloud computing, what is cloud computing, how it's working. Then we have talked about that warehouses, right? No, architecture of Snowflake, three-layer architecture of Snowflake we have discussed, right? Next, what we have discussed? We have discussed the Micro-partition, micro partition. Okay. No, no, micro-partition, warehouses, cluster, warehouses, and means warehouses and cluster means multi warehouses, warehouses and multi cluster. We have learned, right? Warehouses and multi cluster we have learned. Virtual warehouse, micro partition, clustering we have learned right now. So as of now, I believe if any doubt, as of now, any question, any queries you have, let me know. Means then we'll start new chapter. So this is not a very frequently used clustering. It's not required in a real-time example, but it's asked by the interviewer. That's why I have touched it. So let me know means anything you wanted to understand again on as of now. So, sir, can you please share all the PPTs and material on the chat again? Actually, I joined today only. That's why. Which chat you have joined today?
So this one, previously I was joining from my browser only, so I was not logging into my profile. Okay, right now only I'm attaching this. Now you can go ahead. Now, Yes. so now the actual means we can start. It's a very important, right? So data loading into the Snowflake. Okay, it's a very important and very means useful, and we do means in almost 90% of the project, 95% of in the project. If you are going to join any industry, you have to perform these things. Okay, so loading the data, right? So if you are means any organization you are going to join, this thing must need to be do it, right? So in Snowflake there are two types of loading, not in Snowflake, everywhere. One is a bulk loading and another is continuous loading. Can anybody tell me means by seeing this word terminology? Can anybody tell me means what is bulk loading, what is continuous loading? I Bulk think loading, bulk. at a time we have to load multiple data. Okay, Then one at a time. Continuously, means one by one we are loading the data. okay. Like continuous loading, what I understand. Anyone? I think it is based on the extraction, how we do. And bulk loading means we have extracted the data for entire one day, whatever the data we have collected. We load that data to the warehouse, okay, or wherever we are doing. And continuous loading means I extracted the data for the 1 hour and I loaded it. And again, I extracted the data for the another 1 hour and I loaded it. Like it is a kind of the continuous loading that we have set, like kind of the automation we did. So it will automatically extract the data for an hour and load it. And loading kind of, I think it is like the truncate and load and whatever we have said, like appending or union, whatever we did. It does according to that. Yeah, correct only. It's, so, as Kalpana mentioned, right, that is means the loading is nothing but means bulk loading is that. Suppose I mentioned when 95% of data, 95% in the of the project in the IT industry, we are loading the data, right, and we are transforming the data. In so few of the cases, we don't need to means unload the data, but uh, and you have to share the data in the forms of you have need to provide some other part means internal team just like a finance team or business BA team, business analyst team, or they can understand the means they require the data. So we are what we do, we take the data, we load it, and we transform it as per the system, and they can utilize it. And as per the requirement, suppose some finance team need data in a such a way, so we what we do, we load the data, and we transform it while loading itself only. Okay, so what is going to happen? Bulk loading is a suppose if we are loading data at one time, right? In one time, one shot, that is bulk loading. You mentioned the correct continuous loading. Suppose from any API or anything. Suppose, for example, have you seen that click budge, right? Click budge where continuous means score is moving on, right? Click budge or is means for the live things we need to search it, right? So where the counting is happening, data is changing, right?
What is going to happen? There's a continuous loading of data. You mentioned the correct by the upload, abstract, right? Append. These are the terminology used by the in continuous loading, union. So this is the difference, bulk loading and continuous loading. So we are going to learn what is bulk loading, how we are going to do it, and we will do load the data from bulk loading by our system. We can load the data from AWS, right? And we are going to load the data continuous loading with the different media, just like Snowpipe. We have a option for loading the data with the continuous loading, right? So now, so there are two types. So bulk loading using copy command. In Snowflake, provide the copy command to load the data. But in any warehouses, it's not previously. It was not means without ETL we can't load the data into any means DVMS. But in Snowflake, with the copy command, we can able to load the data, bulk load. And continuous loading using Snowpipe. We are going to perform this activity in our coming lecture, okay, coming classes. So bulk loading using the copy command. So what going to happen? This option enable loading batches of data from the files already available in the cloud storage. So external stage. So I will tell you the first what we can do means let's we can't do this chapter right now, might be it will be confusion for you guys. So what are the transformation we are doing the data loading while loading the during the data load? So see, I mentioned means Snowflake support transformation data while loading into the table using the copy command. Option include column or reordering. Suppose means a few column renaming, column emission, string operation, other functions, sequence number, auto incremental fields. So these means these are the simple transformation we used to do in our day to day means data activity, right? In data engineering while you're loading the data. Agree? Yes. Yes, Santosh. There are few other way to load the data means by using ETL tools like see means the Snowflake provide a copy command. So simple way copy into table name from a stage. We'll going to learn what is a stage as well and files or file name or pattern type. Suppose if you look for the these types of file like operator have you used in SQL, right? Like operator. Yes, Santosh. So which look for the data on the basis of the pattern, right? Search the data on the basis of pattern. So same way here means if you have suppose the file name will come with the something like means abcd dot means any means jpg file or .csv file. It will load the data. Okay. So in a means we can load the data in this way. So copy command means location of file, file format. These are the things is supported by the Snowflake. That is CSV, TSV, JSON, Abro, ORC, Parquet, XML. These are the means the file format is going to be supported by. And from the where we can take the data, I already mentioned, right? From we can load the data from local environment from our system. Okay, we can take a data from Amazon S3. We can take a data from Google GCP, Google Cloud Storage, or a platform, and we can go to the Microsoft Azure as well, right? Okay, Yes. so these are the things we can perform with the in data loading. So what we can do means we can go ahead with the means stage. See guys, what is going to happen in Snowflake? First, we'll learn the stage now. Might be this is not appropriate to load the data directly. Means, but data loading is important only. Means let's we can. I will show you.
if first here, then we can go one by one topic. So loading the data. Anyway, means how we are, means either we can create a table, right, to load the data into the table is Snowflake. Just we have done it. Yeah. Yes. 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 So same way means, but it's not practical, right? Every time we can't create a table and load, means load the data. It's not feasible, right? Means we can insert the data one by one from our, just like we have Excel, we can create an, and means you can uh, insert the data. It's not going to happen if we are getting data from a CSV, also CSV file from some other means teams. Suppose they are sharing the report to you, and they have a manual database just like a CSV. They are creating the tables and all means data in a CSV file. So what we can do it, means suppose to maintaining a database, what we can do it, we simply load the data into the CSV. So Snowflake, we can't means load data directly. So what is going to happen? So you have seen here, right? Means loading data means from where, means copy command, location of file. What is the location of file going to be happen in Snowflake? Either your local system and either Amazon from cloud. So these three cloud, okay, either local system or these three clouds, right? From there we can, from here, the from four places we can take a data, right? So how? Okay, but इसमें ऐसा कुछ है क्या कि like for example like we are extracting the data from somewhere. For example, I have a website and on website I am selling the product. Like for example, I have a example we are taking the Amazon. Okay, हम्म तो Amazon पे जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं नाउ हम्म मेरे को उसका डेटा चाहिए पर आवर है ना हम्म कि हर घंटे में उसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ और मैं स्नोफ्लैक पे लोड कर रही हूँ ओके तो पहले मैं क्या करूंगी कि मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूंगी डेटा को है ना थ्रू हम्म कोई जैसे कि एपीआई के थ्रू फिर मैं वो डेटा को ऐसा कुछ मुझे ऑटोमेट करना होगा कि वो ना S3 पे आते जाए है ना ठीक है हर घंटे ठीक और है फिर S3 से फिर मैं स्नोफ्लैक पे लूंगी ऐसा कुछ है या फिर अपन डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई वेबसाइट है और वो वेबसाइट को मैं कनेक्ट कर रही हूँ स्नोफ्लैक से और वो वेबसाइट पे जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा कुछ भी आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो डेटा मेरे स्नोफ्लैक पे आ जाएगा ऐसा ऐसा होता है होता है, मैं बता रहा हूँ, अभी वही बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अपने जैसे कि जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो जैसे कि एक्सट्रैक्ट करने का भी कोई अदर अलग अलग वे होता है ना तो अल जो जैसे कि कोई हाँ, जो करेक्ट, ईटीएल टूल हाँ, है ना तो हाँ। जो ईटीएल टूल्स होते हैं एग्जांपल कोई सा भी एक टूल है तो वो टूल को अपन डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी सोर्स या फिर अपने को बीच में कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है जैसे कि कोई सा भी ऐसा वे जिसकी वजह से वो डेटा वहां से एक्सट्रैक्ट होके प्रॉपरली टेबल फॉर्मेट में सही फॉर्मेट में फिर वो अपने को मतलब अपने ईटीएल टूल पे या फिर फाइल फॉर्मेट में जैसे भी वो आए ऐसे डेटाबेस में Local, you guys understand, right? What is local? लोकल सिस्टम अपना ठीक Yes, है yes. है ना? तो देखो गाइस, क्या है ना, ये एक हमारा स्नोफ्लेक सिस्टम है, ठीक है। हम एक स्नोफ्लेक यस सिस्टम है, और ये हमारा मीन्स लोकल अपना सिस्टम है, लोकल सिस्टम आवर ओन इन्वायरमेंट वेयर वी हैव केप्ट डेटा, राइट। और इसमें हमने डेटा रखा है, और ये हमारा क्या है, सॉरी, ये हमारा हो गया। सो अमेजन जीसीपी एंड अजूर, ओके। अब क्या है ना इधर में, तो देखो क्या होता है ना, अगर स्नोफ्लैक को डेटा लेना, हमारे दो तरह से डेटा को ले सकते हैं, ठीक है। तो डेटा
डेटा को कैसे ले सकते हैं, दो टाइप से ले सकते हैं। अगर हमारा लोकल सिस्टम से करना होगा डेटा को स्नोफ्लैक के अकाउंट में लोड करना होगा, इवन हमको पता है कि स्नोफ्लैक भी के पास भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दे स्नोफ्लैक डोंट हैव देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, दे इज आल्सो means dependent on these three cloud provider, right? These three means cloud provider, और इवन मीन्स हमें ये तीनों नहीं, एक जगह और मतलब ये these three क्लाउड प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट है। इसका जो भी डेटा होगा इसी पे रखा जाता है, अदर अमेजन S3 अमेजन पे रखा जाए या जीसीपी पे रखा जाए या एजूर पे रखा जाए, राइट? एग्री? अभी अब तक हम लोग ने जाना है ना? यस। ओके, Hmm. नाउ तो सपोज करो अब हम लोग बात करें डेटा लोडिंग को, लोडिंग करना होगा तो कैसे करेंगे? तो हमारे लोकल सिस्टम में कुछ डेटा है, मान के चलो सीएसवी फाइल है, सीएसवी फाइल है, ठीक है, सीएसवी फाइल है, चाहे जेसन फाइल है, ठीक है, जेसन फाइल है, हमारे पास सीएसवी फाइल है, जेसन फाइल है। अब क्या करना है हमको? हमको लोड करना है। तो हम कैसे करेंगे? इसको लोड करने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले हमको उठा के इस डेटा को इंटरनल स्टेज में रखना होगा, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग इसमें लोड नहीं कर सकते स्नोफ्लैक पे, ठीक है। और हमने कल देखा था, अगर इफ यू रिमेम्बर, हम यहाँ पे देखे थे कि डेटा को यहाँ पे देखे थे, राइट, ऐड डेटा, राइट, अंदर इंटरफेस में देखे थे ना, Hmm. हाँ ठीक है। ये तो मैनुअली होता है ना? हमको लोड करना है, हमने देखा कि सिस्टम से कर लिए हैं, लेकिन इसके बैकएंड में क्या चलता है, कि बैकएंड में क्या कर चलता है, हम अभी जो ड्राइंग के थ्रू पेंटिंग बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से इसमें इंटरनल स्टेज है, ये इंटरनल स्टेज पे पहले लाता है पुल करके डेटा, और इंटरनल स्टेज जो होता है स्नोफ्लैक के अंदर होता है, एक प्लेस होता है, एक टेम्पोररी एक प्लेस होता है वेयर दिस इज गोइंग टू बी कीप, और उसके बाद यहाँ से पिक करता है। तो पहला स्टेज में कोई भी डेटा को हम लोड करें, चाहे मैनुअली करें चाहे कमांड से करें, ये दूसरा स्टेप है लोडिंग द डेटा। तो यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, गॉट इट? Yes, yes. ओके, सेम वे हमको क्या करना है, अगर हम अमेजन से मतलब हम कभी कहीं से भी डेटा लेते हैं, किसी भी जगह से, कहीं किसी भी प्लेस में ले सकते हैं, किसी से भी लेते हैं, तो मान के चलो ये तीनों जगह पे हमारा डेटा रखा हुआ है, और जितना भी एपीआई बोल रही हो, मीन्स कुछ भी बोल रही हो, जहाँ से रियल टाइम डेटा हाँ आता है, हाँ। हाँ ठीक है। हम्म So what हम्म we can do going to be, we can create a S3 bucket here, right? मैक्सिमम यही करते हैं, जी। और S3 में हम हाँ। अपना मतलब हमारा एपीआई के थ्रू डेटा आ रहा है, ठीक है, हम्म एपीआई से डेटा आ रहा है, हम्म ओके। और नाउ यहाँ से हम क्या करते हैं, एपीआई के थ्रू डेटा आ रहा है, S3 में रखा हुआ है, S3 से हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के एक्सटर्नल स्टेज में रखेंगे। तो ये पहला स्टेप हुआ, ये नॉर्मल हो गया, हम इस स्टेप को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम स्नोफ्लैक टेबल्स के अंदर करेंगे दूसरा स्टेप, ठीक है, गेटिंग? ठीक है। हाँ, Hmm. लेकिन ये एक्सटर्नल स्टेज क्या होगा अपने लिए, अपने एग्जाम्पल में, वही हम बता रहे हैं, आपके एक्सटर्नल केस में। एक्सटर्नल स्टेज अगर होगा, सपोज करो हाँ कुछ भी चीज को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, कुछ कहीं भी रहता है ना, कुछ ना हाँ बॉन्डिंग रहता है हाँ कि हाँ नहीं, हम डायरेक्टली हाँ। नहीं खरीद सकते किसी चीज को, ठीक है, बहुत सारा जगह जब बॉन्डिंग होता है हम डायरेक्टली नहीं ले सकते। चाहे हमारा शेयर जो है, शेयर मार्केट एवरीबॉडी इज यूजिंग, राइट, स्टॉक हाँ मार्केट खरीदते हाँ हैं, देयर मस्ट बी ए हाँ ब्रोकर बिटवीन दैट, राइट, विदाउट हाँ। ब्रोकर का नहीं होता, चाहे शेर खान हो, जरोधा हो, चाहे ग्रो हो, चाहे अपस्टॉक हो, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, कुछ भी हम्म। होगा, हम उसके थ्रू ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक मेडिएटर है, क्योंकि यहाँ से डेटा को उठा के यहाँ लाना होगा और इसमें से यहाँ लाना होगा, ठीक है। ये क्या है, ये दिस इज अ फंक्शनैलिटी ऑफ स्नोफ्लैक इटसेल्फ ओनली। सो ये क्या करते हैं, एक मीन्स यहाँ पे डेटा को रखते हैं और यहाँ से उठा के लाते हैं अपने टेबल के अंदर। सपोज करो एक टेबल है, यहाँ यहाँ टेबल है, तो हम हम्म डायरेक्टली मतलब यहाँ पहले हम उस टेबल का इस यहाँ से उठा के इसमें एक्सटर्नल स्टेज में लाएंगे,
जब जब हम्म। क्लाउड साइड से डेटा लेंगे तब, ठीक है। और जब हम अपने लोकल से सिस्टम से लेंगे तो इंटरनल स्टेज में पास करेंगे, और इंटरनल स्टेज में फिर जाके हम ये करेंगे स्नोफ्लैक में टेबल में इंसर्ट करेंगे डेटा, ठीक है। और इसी में इतना ही डेटा लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ ह्यूज, नॉट मीन्स वेरी, मीन्स वेरी ह्यूज। एससीडी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है किसी ने? सीआईसीडी पाइपलाइन पढ़ा होगा ना, चेंज मीन्स नहीं, सीआईसीडी मीन्स सुना है ना नाम, ठीक है। सुना है, हाँ हाँ, सुना है। सो ये जो होने वाला है, ये मतलब कंप्लीट हमारा मतलब जो स्नोफ्लैक के क्लासेस होने वाले, नॉट स्नोफ्लैक, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर, मीन्स अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा ब्रिक्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पाइथन, if you are going to be means talk about the what we can say that um, SQL or any data warehouse. So we are going to be focused on only the data loading, transformation, and unloading, and providing means unloading or means making the get data ready. So three steps करते हैं: extraction, transformation, unload, right? So तीनों चीज हमको देखना होगा, और यही मेन है। सो इस कॉन्सेप्ट को समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट को स्नोफ्लैक में समझने के लिए अभी मैं ओवरऑल एक आइडिया दे दिया कि कैसे इसको लोड करते हैं। तो लोकल से हमारा इंटरनल स्टेज में आता है, ठीक है। इंटरनल स्टेज से टेबल, उसके उसके बाद हम स्नोफ्लैक टेबल्स के अंदर डेटा को रखते हैं। वे हाउ वी आर कीपिंग द डेटा इनटू द स्नोफ्लैक, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेबल और आइदर इन द फॉर्म ऑफ व्यू, और मैक्सिमम व्यू में ही रखते हैं, बिकॉज व्यू इज अ नॉट अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, राइट, ओनली, राइट, इट्स अ रिलाई ऑन अ टेबल इटसेल्फ ओनली। ओके। हाँ, फाइनल स्टेज में रखते हैं ना वो तो। हाँ। इसकी भी स्टेजेस होती है ना, लाइक एक जो होता है हम डायरेक्टली हमने डेटा उठाया और लोड किया, वो फर्स्ट होगी। सेकंड स्टेज में हम उसको क्लीन करके रखते हैं, और थर्ड स्टेज में हम उसको एग्रीगेटेड वे में रखते हैं बिजनेस लॉजिक लगाने के बाद। तो तीन सो स्टेज होती है ना सो इसकी। इसीलिए इसीलिए हमने डेटा लेक सुना होगा, ठीक है, डेटा लेक, ठीक है। हाँ। डेटा लेक को हम्म। बोलते हैं जहाँ पे हर टाइप का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, हर टाइप का डेटा हाँ। पड़ा हुआ है, ठीक है। So data lake means a huge volume of data is available in any format, right? ठीक है। ठीक है। तो इसमें अपने एक्सट्रैक्शन का कैसे करेंगे, मतलब एक्सट्रैक्शन के लिए तो अपने पास ऐसे कुछ सोर्स नहीं है ना, तो अपन कहाँ से सोर्स एक्सट्रैक्ट हम करेंगे हम हम डेटा? लोग अमेजन का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। हाँ। हाँ। इसीलिए देखो, हाँ। मतलब ये इंटर रिलेटेड है, हम थोड़ा सा काम कर लेते हाँ। हैं स्नोफ्लैक में, जो हाँ। स्नोफ्लैक से हो हाँ। सकता है। और फिर हाँ। दूसरा स्टेज में आफ्टर 10 to 15 डेज हम ये जो इधर से है ना, हम्म। इससे भी मतलब ये बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। वन बाय वन हम सब पे हाँ। जाएंगे। हमें फिर से अमेजन का ट्रायल अकाउंट बनवाऊंगा तुम लोग से, एंड देन हाँ। वी आर गोइंग टू यूज मीन्स इंटायर थिंग। अगर नहीं तो हम मतलब ऐसा करेंगे, अमेजन का जैसे ट्रायल अकाउंट होता है 1 ईयर्स के लिए होते हैं, हम्म। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ। और वो क्या करते हैं, 1 रुपया कट करते हैं तुम्हारे अकाउंट से, ठीक है, ओके। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ डिटेल्स देना होता है, इसमें अकाउंट डिटेल्स देना पड़ता है। 1 रुपया कट करते हैं, फिर हाँ। रिटर्न कर देते हैं, ये दे आर नॉट टेकिंग एनी चार्जेस, अच्छा। ओके, ठीक है। बट 1 साल अच्छा। वैलिडिटी होती है, मेरी तो 3 साल मैंने ओके। मतलब कंटिन्यूस किया है। तो फिर खत्म हो गया, तेरी तेरी ईमेल आईडी अभी तीनों खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा। तो ये है। संतोष, मेरे को ना बताया, एक तो बताया मतलब ट्रांसफॉर्मेशन और लोड तो समझ में आता है, पर ना एक्सट्रैक्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मतलब उसके जो डिफरेंट मेथड्स है ना, कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा इशू आता है, बस वो समझ में नहीं आता। नहीं देखो, एक्सट्रैक्शन मतलब कहीं से, एक्सट्रैक्शन का मतलब कहीं से उठाना डेटा को, ठीक है। हाँ, हाँ। कहीं से भी उठाना। तो कहीं से भी मान के चलो, हम्म। मतलब हमारा कहना है, हम लोग तो इसी एक्सट्रैक्शन को कैसे कर सकते, एक्सट्रैक्शन का मतलब अगर हमारा लोकल सिस्टम में है पड़ा हुआ कोई टेबल, हम्म। उसको उसको एक्सट्रैक्ट किए, फिर लोड कर दिए, ठीक है, हम्म। ठीक है। पर और हम रियल टाइम में देखें तो वैसा। तो रियल टाइम में तो उसी को उसको तो हम पढ़ेंगे ना यहाँ पे, मतलब अगर कहीं से हम डेटा ला रहे हैं, ठीक है, हमारे पास तो कोई हाँ। एपीआई अभी है नहीं, ठीक है। एपीआई हाँ। एपीआई अगर रहता है रियल टाइम में तो उसको भी करके देखते हैं, ठीक है। एपीआई अगर है, मैं बता हम्म। सकता हूँ कि कैसे करना है उसको, ये कर। एपीआई हम्म। से हम क्या करेंगे, डेटा को रिलोकेट करके
क्योंकि all data is coming through API only, right? Or we are dumping Yes. into the any means any S3. Hmm. means storing place, Hmm. right? S3 otherwise Hmm. GCP और कहीं पे डंप कर लो, ठीक है। Hmm. और वहां Hmm. से सिंपल स्नो पाइप के थ्रू तुम लोड करते रहो कंटिन्यूस डेटा, ठीक है। Hmm. स्नो Hmm. पाइप Hmm. हम लोग देखेंगे, स्नो पाइप इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल सी द डेटा हाउ डेटा इज फेचिंग। तुम्हारे हिसाब से तुम चाहती हो हर सेकेंड मतलब हर जब भी मतलब हर 1 मिनट में चाहती हो डेटा लोड करने, 10 मिनट्स में Streaming चाहती हो, data. हाँ मीन्स 10 मिनट्स में डेटा मीन्स चाहती हो, 1 आवर में डेटा चाहती हो। तो उस तरह से मतलब Hmm. टास्क होता है, लोडिंग होता है टास्क। हम लोग क्या स्नो पाइप क्या करते हैं, स्नो पाइप इज अ कंटिन्यूस लोडिंग द डेटा। स्नो पाइप इज अ कंटिन्यूस लोडिंग, जब भी हमारा न्यू डेटा आएगा वो फट से हमारे स्नोफ्लैक में इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, एक हो गया ये कंटिन्यूस डेटा, इसको किसी का मतलब जरूरत नहीं है, डेटा आया ये लोड कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। मतलब जैसे हम कल कर रहे थे ना, मतलब यहाँ पे ऐसे करके लोड कर रहे थे यहाँ हाँ. से, Hmm. मैनुअली Hmm. करना Hmm. पड़ता है, चाहे क्वेरी को रन करना पड़ता है, वो वन टाइम सेटअप है, ठीक है। अगर सब कुछ डेटा आया और हम लोड कर दिए। Hmm. तो एपीआई जो होता है वो कस्टमाइज होता है क्या सभी के लिए, लाइक सारे अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है नहीं नहीं जिनके नहीं नहीं अलग नहीं नहीं अलग। नहीं नहीं नहीं, देखो रॉ कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, ठीक है। रॉ हाँ. कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है कि तुमको कहीं भी एक डेटा को रखना है थोड़ा देर के लिए, हम्म. ठीक है। और वहां से मतलब क्या करते हैं, तुमको लोड होने के बाद तुमको ट्रंकेट कर देना उसको, ठीक है। मतलब एपीआई के थ्रू अपन डायरेक्टली वेबसाइट से डेटा लेकर आ सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। क्योंकि देखो हमारी कंपनी में पता है कैसा था। हमारी कंपनी की देखो एक वेबसाइट है, हम्म ठीक है। और वेबसाइट के बाद में एक ना सिस्टम है, लाइक ऑर्डर लॉजिक्स करके एक सिस्टम है। तो हमारा जो वेबसाइट का जो डेटा है ना, वेबसाइट पे जो भी ऑर्डर्स आते हैं, तो वो ऑर्डर्स का डेटा हमारे पास में डायरेक्टली ऑर्डर लॉजिक्स में आ जाता है टेबल वाइज, ठीक है। अब हमारी कंपनी क्या करती है कि वो जो ऑर्डर लॉजिक्स है उससे डेटा जो लेकर आती है अपने Amazon रेडशिफ्ट पे, हम्म है ना। तो फिर मेरे को बस ये जानना है कि डायरेक्टली अपन वेबसाइट से डेटा को Amazon रेडशिफ्ट पे कर सकते हैं, या फिर अपने को जरूरी है कि अपने को Amazon लाइक वेबसाइट से पहले वो ऑर्डर लॉजिक्स में आएगा कोई सा सिस्टम, और फिर ऑर्डर लॉजिक से फिर हम रेडशिफ्ट पे करेंगे। मतलब क्योंकि वो एक अपन समझ रहे हो ना कि एक वो मीडियम हो गया ऑर्डर लॉजिक्स, हाँ हाँ कि वहां पे अपने को पूरा रियल टाइम डेटा मिल रहा है। मतलब वो ऐसा हो गया कि देखो सीआरएम हो गई अपनी वेबसाइट, है ना, और हम्म। ईआरपी अपना हो गया ऑर्डर लॉजिक्स। हम्म तो तो देखो ये ऐसा ये है, तो अपने ये को डिपेंड ईआरपी हमें करता है तो ना, इसमें मतलब जरूरी है। ये डिपेंड हाँ. डिपेंड करता है, हमें एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि हम कैसे डेटा को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, कहीं भी, हम्म. ठीक है। हम्म. अच्छा. कैसे इंजेस्ट करते हैं हम अपने मतलब वेबसाइट, हम कैसे डेटा को इंजेस्ट करते हैं वो समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद हमको नहीं पता है कि हमारे किस प्रोजेक्ट में कैसे डेटा है, कहाँ से डेटा लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम्म. हमको पता नहीं है, वंस विल गेट टू नो दैट कि हाँ हाँ. प्रोसेस हमको पता होना चाहिए। थोड़ा बोरा हाँ. कोड हाँ. क्वेरी मीन्स थोड़ा सा मतलब चेंज होता है, लॉजिक थोड़ा चेंज करनी होती है, जस्ट जस्ट अ हाँ. सिंपल थिंग, और कुछ नहीं है। अच्छा, तो जैसे जब हम इंटरव्यू देंगे तो फिर वो तो हम लोगों को एक क्वेश्चन रहेगा ही नहीं कि लाइक तुम्हारा एक्सट्रैक्शन कैसे था, मतलब हाँ एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस और वो हाँ सब हाँ चीजें। ऑफ कोर्स मीन्स दे विल आस्क यू, ये सारे चीज हम कवर तो करेंगे, डोंट वरी, मीन्स हम कवर करेंगे हाँ. सारे, मतलब तुम्हारे मतलब हम बोले हैं ना कि सब चीज कवर करेंगे तुम्हें, मीन्स डोंट वरी अबाउट द इंटरव्यू, what is going to be asked by the interviewer that will also going to be I will tell going to tell 80% maximum chances होंगे कि 80%, और सब नॉट 80%, 50% डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चन बिफोर ओनली, मीन्स क्या पूछेंगे तुमको आइडिया होगा उसका, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, देखो ठीक है। दुनिया में दो टाइप के इंटरव्यूअर होते हैं, हाँ. एक होते हैं कि जो तुम्हारे, उनको पता होता है कि इफ दे नो दे आर हम्म. स्ट्रांग इन मीन्स दे टेक्निकल स्किल्स, दे आर एबल टू हैंडल इट, हाँ. ठीक है। और हम्म. कुछ लोग होते हैं मतलब दुनिया, कुछ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं वो प्रोजेक्ट के पीछे ही पड़े रहते हैं कि कैसे हो गया, क्या हो हाँ. गया, नहीं हो गया,
मीन्स हमको हाँ, प्रोजेक्ट से यार वो प्रोजेक्ट थ्योरी के पीछे पड़े रहते हो, डेफिनेशन के पीछे कि यार डेफिनेशन सही होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड, उसके पीछे पड़े होते हैं। वो डिपेंड करता है, वही तो बोला मीन्स वो डिपेंड करता है हम्म। इंटरव्यू टू इंटरव्यू। सो आवर टास्क इज कि मतलब हम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, हम अपने स्किल्स को कितना मजबूत करें। और रही बात और प्रोजेक्ट का ओवरऑल लेआउट, हम कैसे अपने आप को तैयार करें कि जो कि मतलब एक डे टू डे एक्टिविटी नॉर्मल हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उसमें क्या क्या, जैसे कि एससीडी टाइप कैसे मैनेज करते हैं, एससीडी टाइप पता है ना? नहीं, एससीडी नहीं पता मेरे को। नहीं। एससीडी का फुल फॉर्म क्या है? स्लोली चेंजिंग डायमेंशन दैट इज हाँ चेंज। हाँ, ये पता है मेरे को। हाँ एससीडी, हाँ। स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। हम्म। ठीक है गाइस, आई थिंक बहुत हो गया, 2 घंटा हो गया आज, ठीक है। चलेगा, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। तो तो कल कितने बजे ज्वाइन करना है, 9 बजे या 9:30 बजे सुबह? कल देखते हैं, मतलब कल तो ऑफ ही है ना, तो हम देखते हाँ, हैं, मतलब सैटरडे। कोशिश करेंगे कि कल नौ हाँ। बजे ही ज्वाइन करें, या चाहे साढ़े 9:30 में ही ज्वाइन करें, 9:30 में ही रहने दो, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक और है, 9:30 से ज्वाइन कर लेंगे, फिर हाँ स्ट्रेच कर लेंगे अगर जरूरत हुआ तो, मतलब हाँ, आज बोलेंगे ऑलरेडी तो। थोड़ा मतलब ये हो गया, कल थोड़ा स्टिक रहेंगे, मतलब जहाँ हमको करना है। और थोड़ा मैं मुझे मतलब कल से स्टिक रहेंगे, और हाफ एन आवर मतलब सीक्वल का कवर करेंगे। आज थोड़ा मतलब ये हो गया, ठीक है। ठीक है, क्या कोई पावर गया तो बहुत मुझे प्रॉब्लम हो गया, ठीक हाँ, है। वो तो हाँ ठीक है। होता ही रहता है बैंगलोर में, हाँ कुछ कर नहीं यार, सकते। मतलब पता नहीं कैसे, मतलब ये समझ नहीं में नहीं नहीं, आया। ये हर लोकेलिटी में बैक बाय बैक जाता है, मतलब जाता है तो एकदम 3-4 घंटे। नहीं हाफ ऑफ द मतलब ये होना नहीं चाहिए था ना, असल में होना नहीं चाहिए था। क्या कर सकते हैं, मतलब